Past present. Amit. Voice asuchi. Before starting the class, just let me know the audio video clear अछि na nahi. Audio video clear? Start करिबा आजिर class. This is the prelim class. माने prelim रे को type रा questions आपण मानकर आसे सेडा को basically हमें discuss करिबा. Okay. Start करिबा. Before that, see. Study while others are sleeping. Work while others are loafing. Prepare while others are playing, and the dream while others are wishing for. So basically आपण मानकु सेई टाइम रे प्रिपेयर करिवार अछि जेते बेले कि nobody can और जो टाइम रे समस्त हार मानि जाइथिबे सेई टाइम रे जदि आपण माने प्रिपेयर करूछंदी then every impossible can make it a possible. Okay, so start करिबा. The first question कोन अछि directly आसो. So which of the following is a viral disease? तो आजिर basically questions आपनकर class रहिबो health and diseases उपरे. It's about health and diseases chapter. तो एथिरो को टाइप रो क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसे ताको आपण माने जी देखिबे. ओके रेडी जिबा देखिबा को टाइप रो क्वेश्चंस आपण मानकर आसुची. ओके आसो. So which of the following is a viral disease? Cholera is a viral disease, measles is a viral disease, tuberculosis is a viral disease, or the diphtheria is a viral disease. What will be the right answer? Come on quick. या भितरु right answer आपनकर कोन हबो? Which of the following is a viral disease? Cholera आपण माने जानि संती. This is a what? कि आपनकर cholera form करूची. The vibrio cholera itself a bacterium disease, not a virus disease. Then हमें कहि परिबा कि this is a bacterium disease, not at all a viral disease. यार causing agent किए ता ना कोन रहउची. The name is the vibrio cholera. RAE. ओके विब्रियो कोलेरा रहुची ताको हमें रिलेट करि पाउछे. मीजल्स सेटा मिल्स नाही प्रदोष, दैट इज द मीजल्स. तो मीजल्स को हमें काहेकि कहिबा बिकॉज़ दैट कॉज्ड बाय द वायरस. तो मीजल्स कोन होची ना पारा माइक्सो वायरस आपनकर रहुची. तो मीजल्स वायरस ता नाम में कहूचे पारामिक्सो वायरस. दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन एंड हमें कहि परिबे प्रोड्यूस आपनकर कोन ना बहुत सारा कोप्लिक स्पॉट्स आपनकर छाडी दिए जोटा को हमें बसंत रोग बोली कहउतिले. Okay, so that is आपण माने relate करि परिबे. That is prevent by the MMR vaccine. जदि आपण कहला measles can be prevent or cannot be prevent, it can be prevented through the MMR vaccine. The name of the vaccine of the measles is the MMR vaccine. आकु relate करि परिबा. What is the tuberculosis? मते को TB आपनकर को टाइप रो disease? This is a viral disease, this is a bacterial disease, this is a protozoan disease, or what? कौन कहि परिबा. Now this is again a कोना ना bacterium disease. This is again a bacterium disease. Yes, then diphtheria कहउचे हमें कोन. This is also a bacterial disease. That is कोन आपनकर caused by the cyanobacterium diphtheria. ना सुनिथिबो. This is हां DB सेम. तो की आपनकर causing agent के रहउची ना cyanobacterium diphtheria. एको भी मने रखि थाओ. ओके क्लियर. सो आपनकर चारिटा ऑप्शन रो रहिला गोटिया आपनकर वायरल डिजीज, रेस्ट ऑल आर द बैक्टीरियल डिजीज एंड कॉजेस जो बैक्टीरिया आपनकर कॉज करूची तार ना कोन होची. दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ओके जोटे कि आपनकर जो डिप्थेरिया रहउची आपनकर कोन कहउची ना थ्रोट रे द सीडो मेम्ब्रेन आपनकर प्रेजेंट रहउची. कोन ना सीडो मेम्ब्रेन को आपनकर प्रेजेंट रहउची सेटा रे आपनकर थ्रोट रे कोन ताको इन्फेक्शन क्रिएट कराय. दैट प्रिवेंट बाय द डीपीटी वायरस वाले सॉरी डीपीटी वैक्सीन. कौन होची ना जदि आपन को पचारा गला कि डिप्थेरिया इज क्यूरेबल और नॉट. यस और वैक्सीन आपनकर अछि ना नाही. यस दिस इज आल्सो प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन. द नेम इज द डीपीटी वैक्सीन. आपन मानको जानि थिबे हॉस्पिटल ले आशा दीदी माने आसी कि कुहंती जाई कि हॉस्पिटल ले नेबा लागि. सो दिस इज क्यूरेबल बाय द डीपीटी वैक्सीन. यस नेक्स्ट जिबा. नेक्स्ट आसो मते कुह which one is caused by protozoan.
व्हिच वन इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन कहा द्वारा हमें कहूचे क्विक क्लास इंटरेस्टिंग अच्छी जदि तुम मैंने कहीं एफर्ट दबनी देन जेकोसी क्लास भी आपन को बोरिंग लागिवो जदि आपण माने इंटरेस्ट देबे ताहाले सब क्लास आपन को इंटरेस्टिंग लागिवो नो मैटर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द OPSC और द UPSC ओके आसा so which one is caused by a protozoan कहले त माने कोन कहछो वेरी गुड दैट इज द काला अजर काला बाजार नहीं काला अजर कौन होची ना काला अजर हमें कहूचे दैट इज कॉज्ड बाय द लेशमैनिया कोन डिनोफैनी रहूच डोनोफैनी द लेशमैनिया डोनोफैनी दिस इज अ प्रोटोजोआन पैरासाइट जहा पाई कि हमर कॉज हेई थाए द डिजीज दैट इज द प्रोटोजोआन सो प्रोटोजोआन इज द कोन ना हम कहि परिबा दिस इज a parasite or sorry not a parasite which one is caused by a protozoan so protozoan hi apanakara cause करे the disease is the kala ajar that is transmitted by the sand fly and leads to a fever again after apanakara spleen enlargement हे जाए and a dark like धीरे धीरे उडा apanakara patches apanakara skin ने देखा जाए so एटा apanakara किए करे ना transmitter को medium जदी पचरा गला ताहाले transmitted through what sand fly relatable yes or no मने पके परछो रिलेट करि पारुछो मम्स कहले कोन बुझिछो this is caused by a virus this is caused by a virus मम्स को हमें कहूचे कोन ना मम्स virus मम्स भाइरस द्वारा ये होची देन टेटानस को हमें कोन कहूचे द कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टेटानी कोन गुड इवनिंग लोपा कोन कहूचे ना द क्लोस्ट्रीडियम टेटानी रहूची दिस इज अ बैक्टीरियम एंड दैट प्रोड्यूसेस सम टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन कॉजिंग मसल स्पाज्म एंड द लॉक ऑफ द जॉ लाइन ताको हमें रिलेट करि परिबा द टाइफॉइड दैट इज कॉल्ड टाइफॉइड कहा द्वारा आपनकर हुए ना आपनकर साल्मोनेला टाइफी दिस इज आल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज जहा द्वारा के हुए साल्मोनेला टाइफी द्वारा हैला क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर को स्प्रेड माने थ्रू द वाटर इट कैन स्प्रेड ऑफ त मते को व्हाट विल बी द राइट आंसर क्विक Which of the following diseases spread through contaminated water? What will be the right answer? Quick. Comment option को टिके पळा त माने yes the typhoid भी आपनकर होउची cholera भी होउची जोठी दीटा ऑप्शन आपन मान देखि दिले hepatitis A को भी नै जीवो सो राइट आंसर हबो कोन ना all of the above the typhoid हेला hepatitis A हेला and the cholera हेला ओके तो ये सब गुडा आपनकर दिस अ काइंड ऑफ वाटरबोर्न डिजीज हमें कहि परिबा स्प्रेड थ्रू द कोन आपनकर इंजेक्शन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विथ द ह्यूमन फेसेस क्लियर चलो नेक्स्ट रेबीज भाइरस अफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी अच्छा रेबीज भाइरस आपनकर बॉडी रो को पार्ट को अफेक्ट करे दिस इज सपोज योर बॉडी आपनकर बॉडी हो थाउ न होई थाउ आपन माने हां करिवे यस मैम ये हमर बॉडी समान को भितरु कहार भी गोटे बॉडी हेई थाई पारे कहार भी गोटे बॉडी हेथियो तो मते कुह व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर द रेबीज भाइरस अफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी को पार्ट बॉडी रा अफेक्ट करे ऑप्शन नर्व्स अरे वाह हाँ मु सेटा राइट तो कौन हबो हो सो राइट आंसर कौन ना रेबीज भाइरस आपनकर अफेक्ट करूची काहा को ना नर्व्स को बिकॉज हमें कहि परिबा द रेबीज भाइरस आर ट्रैवल्स थ्रू द पेरिफेरल नर्व्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द पेरिफेरल फॉर कोठी की जाय को पर्यंत जाय पारुची ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर्यंत जाय पारुची दैट कॉजेस द फेटल कोन ना आपनकर वेराइटीज ऑफ लाइक कोन आप कहि परिबा द हाइड्रोफोबिया हेला पैरालिसिक जो पैरालिटिक अटैक आपनकर आसे आपन माने कोमा रे पहुंचंती तो एटा आपनकर रीजन जोडा की कॉज हुए थ्रू दिस नर्वस सिस्टम डिजीज एंड एटा आपनकर रेबीज भाइरस द्वारा ही आपनकर हुए सो अटैक डायरेक्टली करे कहा को ना नर्वस सिस्टम को
देन आपनकर लंग्स को आपण रिलेट करिवे कहा सहित ना रेबीज डजंट थ्रो like lungs through तो आपनकर बिल्कुल जायनी but only minor respiratory symptoms like may appear in the latter stage in case of the कोन रेबीज जते बेले पूरा अटैक करि सारिबो in that case lungs रे आपण मानकर किछि minor symptoms देखा छिबो बाकी किडनी एंड स्किन को हम आउट वन आउट भी करि परिबा हने नै कुआ चलो which disease is known as white plague हमें काहो कहूचे समस्तिंगर प्रणाम एक्सेप्टेड सब खुशी रे रुह ओम स्वाहा आसा को मते व्हाट विल बी द राइट आंसर व्हिच डिजीज इज नोन एज व्हाइट प्लेग कहिले त माने संगे संगे जानि दोछ कि मैम आमे आकु मुसा सहित आपन को कोन ना रिलेट करि परिबु कि हां कि नै मिलमिला हे प्लेग को मिलमिला सहित रिलेट कर देलेनी प्लेग को मिलमिला सहित त माने रिलेट कर देलानी मु काई बंची छ त माने आंसर देखि कि जानि परनी तो राइट आंसर एठी कोन हबा ना ऑब्वियसली आपनकर टीबी हबा मन इच्छा सब आंसर मारछन मिलमिला को करी व्हाइट देछि हां व्हाइट देले कोन मिलमिला हबा काई कोठी देखाइ छि यस टीबी सो हिस्टोरिकली हमें कहि परिबा द व्हाइट प्लेग ड्यू टू द एक्सट्रीम व्हाइट लॉस एंड द कोन व्हाइट लॉस मींस कोन हमरा डब्ल्यूबीसी लॉस हुए द पेल कलर हे जाय हमर टोटल बॉडी रा कलर and this माने टोटल बॉडी आपनकर पेशेंट रा अपीयरेंस व्हाइट कलर पर आसी जाय मींस आपनकर लूज ऑफ ब्लड आसी जाय जोथरे डब्ल्यूबीसी बॉडी से आरबीसी कोन कमी जाय तो हम कहि परिबा दिस वाज अ वेरी ग्लोबल किलर बिफोर द एंटीबायोटिक्स एपर्यंत हमर स्टार्ट हेई नथिला तयारी हेई नथिला कॉज्ड बाय द कोन ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस दैट इज द ट्यूबरोकुलोसिस हैला आफ्टर दैट हमर टीबी वैक्सीन इन्वेंट हेई गला तापर आपनकर एज यूजुअल नॉर्मल हेई गला हैला So polio आपण मान जानि सं this is a viral infection that causing the paralysis in the children हैला children cases रे माने छोटो बेले ही आपनकर पोलियो अटैक हुई मिड एज रे केबे हुई बाकी measles कोन हुई ना this is a viral infection with the red rash and the colic spots all over the patient's body हैला तासो रिलेट करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को यार आंसर देली त हां नेक्स्ट the pathogen responsible for diphtheria already discuss करि छै but still आउथरा अछि मते कुआ the pathogen diphtheria को रिलेट करि कि कुआ कोन कहितली diphtheria को cyanobacterium diphtherium कोन सॉरी cyanobacterium diphtheria so cyanobacterium रो आसिला आपण माने जानि परसुंदी this is a bacterial disease this is what again a bacterial disease so ना गुडा को किछि किछि आपनकर लागे ना थोर यूज्ड टू हे गलानी ना सहित माने मन रखि पारि हाँ, this is a bacterial disease. The bacterium produces a dangerous toxin that forms a thick grey pseudomembrane in the throat and making it very hard to breathe. आपनकर breathing problem all of a sudden आसी जाए in the case of diphtheria disease. हाँ, DPT vaccine is related with the diphtheria. Come on, quick. It can also affect the heart. आपको भी relate करि परिबे nervous system को भी ये relate करि परिबे आपण माने. Next को हमते इबोला इज कॉज्ड बाय अरे बा इबोला को टिके रिलेट करेला कोन हबो इबोला इज अ को टाइप रा डिजीज दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज दिस इज अ वायरल डिजीज ऑलरेडी सब जानि चंदे आपनकरटा वायरल डिजीज बिकॉज़ सबुतिक ऑप्शन वायरस रिलेटेड अछि बट कोरोना वायरस लेट मी एलिमिनेट इट फॉर यू टू मेक इट इजी कोन हबो राइट आंसर वायरस तो अछि और अधिकटा कोन कालोस मारुछ ऑप्शन सब गुडा वायरस अछि बट राइट आंसर कोन हबो योर ऑप्शन ए दैट इज द फिलो वायरस कौन कहू हमें ताको हमें कहू दैट इज द फिलो वायरस आफ्रिका कंगो हाँ जो थु तमे आसीच कार्लोस जो आफ्रिका रु तमे धरा ही आसछ कार्लोस सेठु तो द इबोला इज कॉज्ड बाय द कोन ना इबोला वायरस व्हिच बिलोंग्स टू द फिलोविरिडी फैमिली रु आपनकर आसुची कोथरु ना फिलोविरिडी फैमिली रु आपनकर बिलोंग करूची ओके so the filovirus are also known as causing the severe कोन ना exactly नाटा माने पड़नी हेमोरोजिक fever आपनकर गोटा से एक्सट्रीम टाइप रो फीवर आसे देहटा पूरा आपनकर कोन ना ब्राउन कलर सडन देखा जाए with a high fever with a high fatalic low count आसी जाए often 50 रु 90% प्लेटलेट आपनकर ड्रॉप होई से फीवर हैला सिम्पटम्स आपनकर आसे इंक्लूड द ब्रीथिंग प्रॉब्लम ऑल ऑफ सडन आसे ऑर्गन फेल्युअर भी हे जाए एंड जोथिरे आपनकर ब्रेन हैमरेज भले सिचुएशन पळे आसे कोन ना ब्रेन मलेरिया हे जे ऑल ऑफ सडन सो दैट इज अ कॉजिंग ऑफ द माने एई फैमिली रो आपनकर बिलोंग करूची फिलो वायरस हैला
स्पाइनल कॉर्ड पेन है एठी रीजन नहीं मन इच्छा किसी गोटे सिम्पटम्स तुम लिखि दियो मैडम एटा अप्रूवल दे दियंतु मु डॉक्टर तुम माने हो मोर स्टूडेंट्स ना कि आस एमबीबीएस करूच तो द नेक्स्ट अछि कोन ऑप्शन कहलो पैरामाइक्सोवायरस आपन को रिलेटेड कोथिरे जो आपन को मिजल्स कहूची मम्स कहूची तो एई सब डिजीज आपन को रिलेटेड विथ द पैरामाइक्सोवायरस कोरोना वायरस आपण माने ऑलरेडी जानिसंती कोविड-19 को रिलेट कर देबे कोविड-19 हेला सार्स हेला मर्स हेला दीज आर बट नॉट द इबोला these are mainly affect the respiratory system and the spread through the respiratory tract तो ये आपनकर कोरोना वायरस को आपण माने रिलेट करिवे कहा सहित ना माने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अटैक करूथिला okay but this is about whole of the body then what's about the कोन ना rhabdovirus हमें कोन कहूचे मते को so kindly check ma'am no I will not check spinal pain हबो सांगे सांगे गूगल फुगल करी के आंसर दे पकुछ आसो the transmission of the dengue fever is by the transmission आसो मते को the transmission of dengue fever कहा को सब डेंगू हेइसी ना केबे हेइनी को माने को तमारे जति प्रेजेंट अछो तमान के भीतर को माने ऑलरेडी डेंगू रे अफेक्टेड हेइ सारीछ राइट आंसर कौन हबो यस दैट इज द एडिस कौन हबो एडिस एजिप्टी विल बी द राइट आंसर हाँ हाँ भलो हैला मु केबे मिस्टेक मोर निजर मिस्टेक में एक्सेप्ट करे ना कि हो देखिबा चलो रिकॉर्डिंग काढी कि देखो मो मिस्टेक में एक्सेप्ट करे ना नहीं आसा कौन कहूतिली द ट्रांसमिशन ऑफ द डेंगू फीवर इज बाय द एडिस इजिप्टी ओके so the dengue fever is transmitted by the Aedes aegypti mosquito and हमें कहि परिबा who is a day mosquito कहिबा से हमर दिन बेले आसी की कामुडे and it was active early morning and आपनकर late afternoon ही active condition को आसी जान and आपनकर anopheles आपन माने ऑलरेडी जानि छथि what is the anopheles mosquito ना anopheles mosquito spread the malaria not the dengue but जदि malaria causing agent malaria causing हमको mosquito पचारिला ताहाले हमें रिलेट करि परिबा कि what ना anopheles को malaria ko then what is the Culex disease na Culex is also a type of mosquito that transmit apankara filaria jo हुए apankara that is the elephantiasis जो disease हुए apankara कोन कोंती ताकू गां गले कोंती गोदरा गोडो सुनी थिबो तो जो apankara हुए filaria disease तो ताकू causing apankara mosquito रहुची जोटा कि Culex कहूचे तो filaria आपण माने एठी ऐड करि परिबे then house fly ऑलरेडी आपण मान जानि संती जेते सब फूड बॉर्न डिजीज आपण को होउची लाइक द डायरिया हेला टाइफॉइड हेला ए सब को आपण मान रिलेट करि परिबे कहा सहित ना हाउस फ्लाई सहित नेक्स्ट आसा तो व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए हेलमिंथ पैरासाइट द्वारा को डिजीज आपण कर हुए मते को क्विक एबे कहितिली हेलमिंथ पैरासाइट दिस इज अ पैरासाइट दैट हेलमिंथ माने कोन ओर हेलमिंथ इटसेल्फ मीनिंग कोन होउची आपनकर ना ओर एंड ओर मा आपनकर कोन डिजीज करूची वेरी गुड लोपा यस मिस्टर कार्लोस दैट इज द फाइलेरिया हैला
कौन रहिबो ना फाइलेरिया इटसेल्फ फाइलेरिया इज caused by the helminth ता माने रहउची आपनकर ओम जोटा कि माटी रे रुहंती and these are the parasites and mainly उस्चेरिचिया ना सुनिथिबो उस्चेरिचिया कोली हमें कहूचे so these are the main bacteria हमें कहूचे that sorry parasite जोटा कि आपण मानकु देखिबा को मिलिबो and these worms live in the lymphatic vessels and causing the swelling of the legs and the leading infected part of that body हैला जोथि आपनकर एलिफेंटियासिस डिजीज ता क्रिएट हुए लेप्रोसी आपण माने जानि संती जोटा कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री कोन आसे ना माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा ये हुए दिस इज अगेन ए बैक्टीरियम डिजीज हैला इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा कौन कहूची ना इन्फ्लुएंजा भाइरस एटा हम समस्त जानिछु इन्फ्लुएंजा caused by the influenza virus which is infected the respiratory tract तो टोटल आपनकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आपनकर किए हार्म पहुंचाए इफेक्ट किए कराए ना आपनकर इन्फ्लुएंजा द इन्फ्लुएंजा भाइरस देन मेजल्स आपण मान जानि संति मेजल्स भाइरस नेक्स्ट आसो व्हिच डिजीज इज नोन एज द ब्रेकबोन फीवर एटा जो आपण मानकर कोन पूरा हाड़ गोड़ पूरा पीड़ा हे जाय कोन प्लेटलेट कमी जाए हाड़ गोड़ पूरा पीड़ा हे जाए टोटल जॉइंट पेन हुए दैट इज वन एंड ओनली डेंगू ऑप्शन सी कोड आसिला चिकनगुनिया ऑप्शन सी कोथि पे आसीबो चिकनगुनिया डेंगू रे कोन हुए त माने डांस करो डेंगू हेले त माने डांस करो हां यस दैट इज डेंगू चिकनगुनिया दैट कॉजेस अ जॉइंट पेन ऑब्वियसली सिवियर जॉइंट पेन भी करूची बट आपनकर एठी कोन होईची ना ब्रेक बोन पेन दैट मीन्स एमिति पेन करिवो कि लागिबा आपण मानको देह भितरे हाड़ पूरा भांगी गला भलिया so that because of the causes of the intense muscle joint and everything guys आपनकर प्लेटलेट कमी जाए बॉडी रो हैला हेइनी आ कोन जानिबो तम माने आसो तम मानक पाखु दी तीनटा डेंगू मशा ने छाडी दोछि आसो so चिकनगुनिया आपनकर जॉइंट पेन हुए but that causes the severe joint pain but हम कहि पारिया often कोन लॉन्ग लास्टिंग रहे बहुत दिन पर आपनकर भलो भी हे जाए but एटा आपनकर विशेष किछि बॉडी रो क्षति हुएनी हैला केबे हेतिला जगन सो कोलेरा को आपण माने कहउसन दिस इज अ वाटर बोर्न डिजीज सिवियर डिहाइड्रेशन पय आपनकर कोलेरा हुए दिस इज अ वाटर बोर्न डिजीज वाटर बोर्न हैला नेक्स्ट आसो व्हिच इम्यून सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हिच इम्यून सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज क्विकली कहिलो व्हिच इम्यून सेल प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज जल्दी 11A पक्का ए हे जिवो टी सेल्स रे हुए टी सेल ता आपनकर हेल्प करे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रे टी सेल आपनकर हेल्प करिवो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी लाइक आपे कहि परबे इन्फेक्टेड सेल्स मानकू बूस्ट करिवा लागि इन्फेक्टेड सेल मानकू पुनी रिपेयर करिवा लागि टी सेल्स आपनकर थी कोन काम रे आसे बट हियर द बी सेल जोडा को हमें कोन कहूचे ना प्लाज्मा सेल बोली कहूचे तो बी सेल when activated हमें कहि परिबा that become the plasma cells which are the only cell that is कोन later on stage जाय कि एंटीबॉडीज भलिया काम करे जोटा को हमें कोन कहूचे ना IgM IgE and etc and so on आपण माने कहि परिबा IgM हैला E हैला D हैला G हैला हैला ए सब को रिलेट करि पारि हां चलो नेक्स्ट मते कहिबो इनेट इम्यूनिटी कोन कहिला ना इनेट इम्यूनिटी कथा आस कोन कहूची इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड्स इनेट इम्यूनिटी माने कोन ये इंक्लूड करछे स्किन स्टोमक एसिड आपनकर फेगोसाइट्स और ऑल ऑफ दिस कोन इम्यूनिटी रिलेट कोन करिवो मते को ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑप्शन अरे वाह सो व्हाई ऑल ऑफ दीस आर राइट ना इनेट इम्यूनिटी माने कोन दिस इज अ नेचुरल दिस इज इनबॉर्न दिस इज फास्ट लाइन हमें कहि परिबा दैट इज डिफेंड ऑफ द डिफेंस फास्ट लाइन हमें कहि परिबा दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ लाइक आपन पाखे थाए ना बर्थ रु किछि इम्यूनिटी पावर थाए
थाए ना आपनकर छोट बेले भी ज्वर हुए छोट बेले भी आपनकर ठंडा हुए जन्म हैला परे परे ज्वर ठंडा ए सब आपनकर लागी रहे तापरे भी आपनकर इम्यूनिटी सेते बेले थोड़ी ना आपनको मेडिसिन खाइबा को दिया जाए सेते बेले मेडिसिन बिल्कुल दिया जीवनी छोट पिलांगु से माने बस माने बेस्ट फीडिंग रु जेति कि तांकर बॉडी रु मेडिसिन आपनकर टेक ओवर करिवे बट तांको पाखरे किछि निजर इम्यूनिटी पावर थाए सेति पे आपण माने जानिथिबे छोट पिलांकर मेडिसिन नथाई कि भी से माने भलो हे जांती So it is a non-specific and works immediately against any invading pathogen attacking to that infant body. And the skin is a part of the innate immunity. Even the stomach acid, जोड़ा को हमें कहूचे कौन hydrochloric acid HCl कहूचे that is part of the innate immunity. The phagocytes that's also the part of the innate immunity. These include the neutrophils and the कौन ना macrophages. ये सब आपन include करूची that which eat and destroy the invade microbes. So right answer कौन एटी all of these will be the right answer. Yes, Jagan Swai, that is the first line of defense. So innate immunity is made up of the physical barriers, the skin और हम कहबे chemical barriers के रहउची ना आपनकर different stomach acid आपनकर chemical barrier रहिबो physical barrier आपनकर skin रहिबो and the cellular defense आपनकर की phagocytes तो एटा आपण मान लिखि दियंतु फॉर एग्जांपल बुझी पेबा पई आपनकर physical barrier भाबरे हम कोडा काम करूछे innate immunity पई physical barriers भाबरे skin को काम करूछे chemical barriers भाबरे then phagocytes को हमें कौन कहूचे ना this is also known as what ना cellular defense. So all of this will be the right answer. Yes. चलो next मत देखो memory cells are produced during what What will be the right answer? Option B. Jagan. Yes. That is the adaptive immune response. So the memory cells are produced during the adaptive immune response. What is the innate immune response? It आपण मानको already बे कहली just recent. Adaptive immune response कौन ताहले ना adaptive immunity that creates a memory beta cells or memory B cells हमें कहूचे and the memory T cells after the exposures with the pathogens or the vaccines. ता सहित मिसिला परे ताकु मीट ऑफ कला परे आपनकर इम्यूनिटी आहुरी बूस्ट हुए इम्यूनिटी स्ट्रेंथ हुए. Then these memory cells help the body respond faster and stronger during the future infections, which is the basis of the vaccination. Okay, how? So allergic reaction कहले हमें कौन बुझुचे ना that is allergic reactions involve the IgE antibodies immunoglobular antibodies E जोटा कि IgE हमें कहूचे that is the must cell. The fever हमें कहूचे fever is just a symptom of the body response to the infection. Next, which antibody is fast during infection? को antibody आपनकर fast up हो जाए during the infection मते कुहा which antibody एठी आपन को कोन कहूची ना immunoglobular A, immunoglobular E, immunoglobular G or the immunoglobular M. What will be the right answer? Quick. A हबनी A आपनकर कोन हबो ना that is the mucosal secretion पई आपनकर relate हबो. This is for the mucosal secretions. Then आपनकर E कोथि पई हबो that is for the allergic reaction. मन रखिता E for the allergic reaction. This is very common and आपनकर एटा बार बार एग्जाम रे पड़े हैला. Then IgG immunoglobular G हमें कोथि पई कहबा that is most abundant in the antibody and provides a long term protection. So IgM का हमें कहबा this is very common, we can easily कोन see it in every secondary body. So it is common. बाकी IgM को कौन कहबा हमें ना it indicates a recent and current infection. Okay, next question answer मते दियो. हो okay, next question answer मते दियो. Which immunoglobulin is related to allergy?
Which immunoglobulin is related to the allergy? Allergic ପାଇଁ କହିଥିଲି ଏବେ କ'ଣ? Option IgE. This is the immunoglobulin ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ important ରହୁଛି, that is the E1. हाँ मैम आर आई प्रिलिम रे 64.66 फाइनल मार्क आफ्टर नेगेटिव मार्किंग एसीबीसी मेल प्रिलिम क्लियर हबो कि प्लीज कोंतो मैम 64 चांस तो अछि नेक्स्ट देखिबा हला राती क्लास रे आसो कथा होछ एबे नहीं दिस इज नॉट द प्लेस टू डिस्कस अबाउट द एग्जाम सॉरी कोडेक्स आपण माने राती 10टा क्लास रे टिके जॉइन हेसा ओके आसो नेक्स्ट मते को इंटरफेरेंस कोन why we are using interference or what is interference actually जल्दी कहलो interference हमें कौन कहूचे quick आंसर दिया टिके interference हमें कहा को कहूचे yes जगन that is the antiviral proteins interference are the antiviral proteins very good so interference hame kon kahi pariba na these are the proteins released by the virus and in virus ra infected cells to one or neighboring jetika cells achi and help them the block viral the replications means apankar gote cell ku jodi infections attack kari dela then other cell automatically infected hei jibo but here the antiviral protein apankar kon kariba na next cell ku attack heba purboru next cell affect heba purboru taku gote barrier bhaliya काम dabo hela and they boost the body's antiviral defense that active the immune cells and slow the viral attack flavor next मते को which immune cell destroys virus infected cells आपनकर virus infected cell को की आपनकर destroy करे मते कहलो which immune cell destroys the virus infected cells quick जल्दी को मते which immune cells destroys the virus infected cells जल्दी NK cells sure और D तो बिल्कुल हबन तो राइट आंसर हियर इज योर एनके सेल कौन की नेचुरल किलर सेल पा तो वायरस इन्फेक्ट सेल को आपनकर डिस्ट्रॉय की करूची ना किलर सेल ही करिवो दिस इज कोन ना आपनकर न्यूट्रल किलर सॉरी न्यूट्रल नहीं नेचुरल किलर सेल हियर एनके सेल इज नथिंग बट द नेचुरल किलर सेल related clear the natural killer cells identify and the destroy virus infected cell and the cancer without needing a prior expenditure clear next chalo RBC already jancha red blood cell that can transport the oxygen and the carbon dioxide throughout the throughout the body and through the blood okay blood and body ko mise ki bloody wow next the passive immunity is provided by मते को passive immunity is provided by कहा द्वारा हमें passive immunity को provide करि पारुछ और the passive immunity is provided by the yes that is the antibody injection passive immunity is provided by the antibody आपनकर injections हमें कहि परिबा the vaccine the passive immunity occurs when the ready made antibodies are given from outside of the body then ame kahiba this is the passive hone nei ko and example apan mane nei paribe the tetanus antioxin and apankar rabies immunoglobulin the snake antivenom the snake antivenom apankar kothre jibo nai apankar passive immunity रे jibo jo immunity रे ame body रे boost करूचे जो immunity को ame body रे push करूचे हमर से immunity रे body रे involve नाही ताको ame कहिबा कोन ना that is the passive immunity exposure to disease हमरा काहे की हबो एक्टिव इम्यूनिटी जोटा हमर इनबॉर्न इम्यूनिटी अछि ठंडा हैला हबो 3 दिन पर ऑटोमेटिकली 2.5 दिन पर जेन्युइनली आपनकर ठंडा कमी जाय जरा हुई आपण माने मेडिसिन बिल्कुल न खाइले माइनर जरा हेइथिबो जदी आपनकर जेति की इम्यूनिटी स्ट्रांग थिबो ता अकॉर्डिंग जरा भी दबी जाय जोटा हम बॉडी रे इन्वॉर्न अछि ताको हमें कहचे एक्टिव इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी को हमें बाहरु पुश करिया को पडुची टू फाइट विथ द इन्फेक्शन टू फाइट विथ द एंटीबॉडीज हमको स्ट्रांग करिया को पडुची दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी हैला आसा नेक्स्ट को मते ऑटो इम्यून डिजीज ऑकर्स व्हेन
Yes, after a long time, Pihu. How are you? I'm the fine. I'm always fine. Yes, vital. हाँ, fatal कही दिया, vital नहीं, fatal. Next question. Autoimmune disease occurs when? Tell me. Sinmoy Swai. कौन है ला रही? Autoimmune disease occurs when? कौन कहूची थी? Yes, that is when a body attacks own tissue, ताकू हमें कहिबा autoimmune disease. That means हमें कौन कहूचे? ना in autoimmune disease, the immune system mistakenly identifies the body and the cell or the foreign and like cell as the माने निजर own cell को गोटे foreign cell भाबे रे recognize करिवो, identify करिवो and attack करिवो ताहारी against रे. तो ताकू हमें कौन कहि परिबा? Maybe Chinmoy. There is a chance after crossing the 65 at least. Okay, देखो. तापरे antibodies form आपण माने जानि संती antibodies कोन ना normal immune function को आसीबा antibodies form. The pain in joints in the like various diseases are there, various आपनकर fevers are there जोथरे आपनकर कोन pain हुए, joint pains आपनकर हुए, even the dengue हेला, आपनकर chicken pox हेला ए सब रे. Next मते को example of the autoimmune disease. एबे मते कहले या भितरु autoimmune disease कोउटा रहिबो? Autoimmune disease कोउटा रहिबो? Let me clear that SLE is nothing but the systemic lupus erythematosus. This is a classic autoimmune disease. कहि तो देली आ कोन कहिबी? This is the classic autoimmune disease. Option A, AIDS is not. AIDS is caused by the HIV virus. नुह. Influenza केमिति त मानकर हबो? Right answer D के मारिथिला. लोपा D केमति हबो? Influenza आपनकर this is a virus. Influenza is caused by the influenza virus which affects the respiratory tract. So it आपनकर केमति हबो right answer? हैला. Next आसो. So which is the live vaccine? या भितर आपनकर live vaccine कोटा मते को. आपनकर from this option which is the live vaccine? Quick. C. अच्छा C कौन अच्छे ऑप्शन? रेबीज आपनकर लाइव वैक्सीन. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए पक्का. वेरी गुड जगन. कौन पे सब रेबीज को मारी मत सब एक्सप्लेनेशन दबो. कोथि पई सब पिहू, राकेश काहे की सब ऑप्शन सी मारी तो पोलियो का मैं कौन कहूचे ना सैबिन पोलियो वैक्सीन बोली हमें जानी चाहिए जोड़ा कि ओपीवी. व्हाट इज ओपीवी? ना ओरल पोलियो वैक्सीन. दिस इज अ लाइव अटेन्यूएटेड निहाती दरकार कारण आपन को जाई के प्रेजेंट रही के आपन को कोन से वैक्सीन दिया जाए. टिटानस आपन को कोन दरकार? दिस इज अ आपन को टॉक्सॉइड वैक्सीन हमें कहि परिबा. द टिटानस वैक्सीन इज अ टॉक्सॉइड वैक्सीन दैट इज मेड फ्रॉम द इनएक्टिवेटेड टिटानस टॉक्सिन आपन को तयारी हुए. Rabies, this is commonly used the rabies vaccine inactivated stages रे, that means killed stages रे दरकार हुए. Hepatitis B, that's also not. Hepatitis B आपनकर कोन recombinant DNA vaccine. This is the recombinant DNA vaccine. कौन सब आज आंसर दउछ? Example of killed vaccine. Example of the killed vaccine एबे कहिली. What can be the example of the killed vaccine? Quick. देखो पोलियो सैबिन रहिले लाइव वैक्सीन, पोलियो साल्क रहिले किल्ड वैक्सीन. सैबिन हाँ पोलियो सैबिन ऑप्शन अच्छी कि सैबिन वाज द लाइव वैक्सीन, साल्क वाज द किल्ड वैक्सीन. है ना? चलो. So toxoid vaccines are made of. मते कुह toxoid vaccines are made of. What is toxoid? Na detoxified toxins are using to made the toxoid vaccines. That means हमें कौन कहि परिबा मते कुह? The toxoid vaccines are made from the bacterial toxins have been detoxified. That means inactivated condition. So they cannot use, so they cannot cause the disease actually. Because inactivated stage रे killed stage रे हमें ताकू यूज करि परिबा. These are safe toxins stimulated the immune system to produce antibodies against the real toxin. होना नहीं? Next मते कुआ. So right answer कौन हबो एठी? ना detoxified toxin को हमें जिबा right answer. Clear? Next. Which is an messenger RNA vaccine? Which is an messenger RNA vaccine? जल्दी.
Which is an messenger RNA vaccine? P. Pfizer BioNTech. हाँ ना देखो कोवैक्सीन टा आपनकर कोन हे जीवो ना सॉरी कोवैक्सीन टा आपनकर कोन हे जीवो ना दिस इज अ किल्ड वैक्सीन और हम कह पारे इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन दैट वाज डेवलप्ड बाय कोन ना भारत मने पडुची भारत कोविशील्ड आपन सॉरी कोवैक्सीन तयारी हितला भारत रु ताको आपन माने रिलेट करी पारिबे यस और नो भारत बायोटेक तयारी करथला ना ताको मने पकौछ ना नाही मैं जानि पाउनी रिलेट करि पाउछ ना नाही clear so the P Pfizer that is the BioNTech is the world's first approved messenger RNA vaccine कोथिरे आपनकर एटा फर्स्ट टाइम पे तयारी हेतिला ना इन द केस ऑफ कोविड-19 एटा आपनकर फर्स्ट वर्ल्ड को आसीथिला क्लियर जा आपनकर जॉनसन हैला जॉनसन एंड जॉनसन ए कंपनी याकु तयारी करछि दिस इज आल्सो ए वायरल वेक्टर वैक्सीन नॉट अ messenger RNA वैक्सीन हां भारत बायोटेक Which is the DNA vaccine या भितर मते कहलो DNA vaccine कोटा रहिला Which is the DNA vaccine को मते या भितर आपनकर DNA vaccine कोटा गुड इवनिंग NDS भालू हिरालाल गुड पिला से ना NDS भालू NDS 2550 भालू तो राइट आंसर एटी कौन हबो दैट इज द जाइकोविड काहे कि जाइकोविड हबो कोविशील्ड त माने कोन आंसर माचो कोवैक्सीन कोवैक्सीन कोथि पई हबो एटी क्वेश्चन आपण मानकु कोन पचारि छी ना व्हिच इज द डीएनए वैक्सीन पचारि छी मु सेटा मेसेंजर आरएनए वैक्सीन कहितली कोवैक्सीन को डीएनए आरएनए सब समान कर दोछ त माने ना कि सो जाइकोविड आपनकर कोन हबो ना डेवलप बाय द जाइडस कैडिला को कंपनी द्वारा एटा तयारी हेतिला माने फास्ट डेवलप हेतिला जाइडस कैडिला हंदा ताकू रिलेट करि परिबो आसो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को बीसीजी दैट इज बीसीजी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट का द्वारा मलेरिया टीबी डेंगू और एचआईवी BCG प्रोटेक्ट अगेंस्ट कहा द्वारा टीबी मलेरिया टीबी डेंगू और व्हाट इज एचआईवी जल्दी the BCG protects against yes that is the TB that is what not TB malaria haboni that is the plasmodium parasites is related with the malaria BCG that is the bacillus calamite guerin vaccine protects against the severe next asa which vaccine is given at the birth time रे आपनकर को वैक्सीन दिया जाय मते कहिलो हेपाटाइटिस मीजल्स आपनकर हेपाटाइटिस बी माने बी और डीपीटी और व्हाट जल्दी को भालू भाई ठीक आंसर दियो जल्दी भालू भाई ओ भालू भाई ठीक आंसर दियो क्रिशु डीपीटी अच्छा डीपीटी के बेहला माने करबा डीपीटी को हमें कौन कहते दिस इज द फास्ट डीपीटी डज इन द गिवन एट द एज एट द कोन जते बेले 6 वीक हेथिबो जते बेले गोटे इन्फेंट को 6 वीक्स हेथिबो सेते बेले ताकू डीपीटी दिया जिवो तो जन्म मात्र के ताकू हेपाटाइटिस बी दिया जाय जन्म मात्र के ताकू हेपाटाइटिस बी दिया जाय दैट इज द हमें कहू जे हेपाटाइटिस बी फॉर द बर्थ डोज is given within 24 hours after the कोन children birth 24 hours भितरे ही आपको देखा दिया जाए आपनकर कहा को हेपाटाइटिस बी को हैला मन रहिबो तो हौ आसो ओपीवी हेले कोन ना 0 डोज ताको आपण माने दे परिबे आफ्टर दैट मे बी गिवन एट द बर्थ और आफ्टर दैट हमें कहि परिबा बट दिस इज एन ऑप्शनल दिस इज नॉट अ कंपल्सरी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मते दियो शॉकिंग हो ना कौन नेक्स्ट हर्ड इम्यूनिटी रेफर्स टू हर्ड इम्यूनिटी हमें कौन कहिबा
herd immunity, yes Jagan, herd immunity is reference to the community. Carlos कोड़े गला, Carlos कोड़े गला. ओराल पोलियो भाइरस, राकेश बाबू ओपीवी रा फुल फॉर्म ओराली पोलियो भाइरस माने सॉरी भाइरस ने वैक्सीन आपनकर पोलियो वैक्सीन को ओराली दिया जाए सेति पई ता ना हला ओपीवी हैला. तो हर्ड इम्यूनिटी हमें कौन कहबा इंडिविजुअल हबनी, दिस इज नॉट अबाउट द प्रोटेक्टिंग वन पर्सन, दिस इज अबाउट द इम्यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी. सो आको हमें कोठे देबा ना कम्युनिटी अकॉर्डिंग याको दिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटा भाइरस कजेस. रोटा भाइरस आपनकर कॉज करूची कोन मते को. काली भी सेम टाइप रे आपनकर 5 टा रु 6 टा क्लास अछि. काली बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपनकर साइंस एंड टेक रो नै के आसीबी. सो बी देयर टू नो मोर एंड मोर. ओके आसो मते को रोटा भाइरस आपनकर कजेस कौन करूची. आज हेल्थ एंड डिजीज ऊपर थिला जोडा कि नॉन साइंस रा बैकग्राउंड पिला मानक पई टिके डिफिकल्ट हे गला, बट नो वेज काली हमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करिया हैला. आसा तो को मते रोटा भाइरस कजेस व्हाट. यस रोटा भाइरस आपनकर कॉज करबा डायरिया. रोटा को आपण माने को पढिया पर केबे केबे लागुनी टिके लोटा साउंड, तो डायरिया हेले त माने सब लोटा धरि के दौड़ तो ता अकॉर्डिंग मन रखि दियो रोटा इज रिलेटेड विथ द लोटा एंड लोटा इज रिलेटेड विथ द डायरिया. ओके so rotavirus is the most common cause of the severe diarrhea in the infants and the young. मने रख रिलेट करके मने रख. the pneumonia कहले कोन कहछ. pneumonia is caused by the bacteria but like the streptococcus bacteria को हम रिलेट करि परिबा for the pneumonia हैला. हां the last question, the HPV vaccine prevent. HPV vaccine कोन यानी ये प्रिवेंट कोन कहछ मते कहिला. HPV वैक्सीन आपनकर कोन एंड आपनकर प्रिवेंट कोन करूची. HPV टाइप्स 7 crore कोथि पई मते को. HPV type is the 16 and 18 causes nearly 17% of the cervical cancer cases and the HPV vaccine आपनकर रहउची cervarix कहि परिबा, even the gardasil कहि परिबा, gardasil 9 कहि परिबा. these are the protects against this the high risk of the HPV virus माने HPV टाइप वैक्सीन हैला. हां इंडिया रे आपनकर HPV वैक्सीन थ्रू द सर्वावैक द्वारा एटा आपनकर इंट्रोड्यूस हेतला इंडिया रे हैला. हां द ब्रेस्ट कैंसर आपनकर हबनी बिकॉज़ हार्मोनल एंड जेनेटिक आपनकर कैंसर टाइप है जेनेटिक बोली प्रूफ हे जाई छी. सो दिस इज ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एनीथिंग हम कहि परिबा हैला. तो यार पीडीएफ आपण माने स्कैन करिवे टेलीग्राम चैनल को एंड एठी आपण माने पीडीएफ पाई परिवे. सुदीप्ता जेके नेटवर्क को आपण माने इंस्टा रे फॉलो भी करि परिवे टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली. हां तो काली ठीक है टाइम रे 5 टा रु 6 टा टाइम रे म आपण मानक पई किछि न्यू क्वेश्चंस नै के आसीबी. सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो एंड बट आज राती 10 टा रे भी क्लास अछि इंपोर्टेंट सेशन मैपिंग ऊपर. तो आज क्लास भी प्रेजेंट है चलो. थैंक यू सो मच. हैव ए गुड डे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रायोरिटाइज योर पेरेंट्स. दिस वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. नो वन एल्स इन द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. ब्रेस्ट कैंसर सर्विकल कैंसर आपनकर कॉमनली देखा जाए वोमेन केस रे माने एटा कहिला भलिया भी क्वेश्चंस माने एटा गोटे कुहा भी जाए कोन आ कहबी त माने को छाड़ा संध्याटा भी खराब हे जिवो. जा शुभ संध्या.